আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। So I must set an example, and therefore I tried and acted. And let me tell you, before acting, I took classes online, how to act. And I'm saying I should not, I may sound pompous, but Zarina Wahab told me, she was co-actor in the film, that I can't believe you're acting for the first time. Sir, I will request, if any one of you has time, tomorrow we'll be again screening this film in the evening. If you have time, please come, oblige us and see the film. And then take a call whether I acted well or not. And the second film is based on a very situation of lockdown. How very ordinary people, even in villages, suffered a lot because of the sudden announcement of the lockdown. This is a story of a marriage which happens on the day the lockdown of 21 days is declared. And I had acted as the grandfather of the bride, and I had no money. I was by selling my land, I have enough money to get my granddaughter married, and then the entire Bharat is stuck. And a very interesting story. Everybody said that it's a very good story and it should be sent. It's already selected for national award. We don't know whether we'll get, but it is already selected. And we are sending it to a lot of film festivals. See, the whole idea of making film at the institute level is that when we try to teach students how to make films in our media science or film study, we only expose them to a camera of, let's say, 15 lakhs, or they can make a short film. But they never have an experience of working with very expensive cameras like Red, which costs about 2-3 crores. They don't have an experience of real life making of a Bollywood film, which will be released. They really don't know what are the timelines are there to release a film, what goes in actually making the film. Unless that happens, they are not ready to get into industry or start their own filmmaking projects. On India's independence, the last 120 days, what happened? How did we get our independence? What happened in the last 120 days? It's a fascinating story. You can imagine that 600 princely states, without a bloodshed, having their own army, decided to join Indian Union, which is rare. Never in the history of mankind something like that has happened. The 600 princely states decided to join without fighting. And the handover of power was done by the British to Indians as if, an elderly person going and handing over the power to the son or something. It was very smooth, very cordial. Pandit Nehru even asked Mountbatten to continue as the Governor General for another 1 year. He said 2 years, but he said only 1 year. So it was very nice. It was an exceptional case in the world history. So it's something amazing. And I think the children must watch what happened. So this was second film, and then we wanted to make a film of Mrs. Gandhi, because a lot of controversy is there, but we really don't know. So we made a film on Mrs. Gandhi's life. So these are 3 documentaries which were made. This is very thorough research. I think we must have read at least 200 books written on Mrs. Gandhi before we finalized the script. And archival footage was taken from worldwide. We actually got archival footage of Mrs. Gandhi from Oxford, where she was studying. So we had some archival footage from there and so many other places. Now, what I'm saying is that we should all be very proud that we started iLEAD with a dream that we want to become the best institute in the country. Books, and if that is being shown in the form of films, that is much acceptable, and the depth of knowledge is very fast being transmitted to the younger generations. If the students are having, the younger generations have the knowledge about their own country, the different spheres of knowledge with every year changing,
then I think that will be the best building blocks for the country. We being into the educational institute, that's a primary responsibility of the college as well. And so being, one of the leaders of this college, the driving force is absolutely fantastic. The visionary, the real visionary of educational institute should be in this format only. Thank you. फ्रेंड्स जो किया गया है वो इसलिए किया गया कि हम जो कॉलेज के लेवल पे हमने 5 फिल्में बनाई है, 3 डॉक्यूमेंट्रीज और 2 फीचर फिल्म। 2 फीचर फिल्म जो है उसमें बॉलीवुड के स्टार भी इन्वॉल्व थे और उसको नॉर्मल जिस तरह से बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ होती है, थिएटरिकल रिलीज़ किया 300 थिएटर में हिंदुस्तान में और 20 थिएटर अमेरिका में। तो इसके बारे में बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह का प्रोजेक्ट जो है बाकी जो फिल्म इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जैसे SRFTI है या पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी करें। और ये एक लेवल, हम देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती है, माने हॉलीवुड से भी बहुत ज़्यादा फिल्में हिंदुस्तान में बनती है। वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म प्रोडक्शन कंट्री। तो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग भी ऐसी मिलनी चाहिए ताकि वो और बना सके। और अब बिकॉज ऑफ दी OTT प्लेटफॉर्म एंड बिकॉज ऑफ दी इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ several places where these films can be shown, इसका बड़ा स्कोप बढ़ गया है। तो फिल्म मेकर्स उसी तादाद में बढ़ने चाहिए। तो इसके लिए हमने इस तरह का एक आयोजन किया कि ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और बाकी लोग उसका अनुसरण कर सकें या उसको देख के इंस्पायर हो सके। सर 1971 वॉर के बारे में इस फिल्म में बताया गया है, ये कहाँ दिखाया जाएगा और किस? ये तो हमने बहुत जगह दिखा चुके हैं। हमने ढाका यूनिवर्सिटी में दिखाया इसको, हमने इसको आर्मी कमांड हमने फोर्ट विलियम में दिखाया इसको, हमने इसको दिल्ली में जो आर्मी के जो आर्काइव है वहाँ पर दिखाया इसको, और काफ़ी जगह बहुत सारी स्कूलों में दिखाया, बहुत सारी कॉलेजेस में दिखाया और दिखाते ही जा रहे हैं। और इसको लंदन में दिखाया हमने, तो और समझो और जैसे जैसे स्कोप मिलेगा और जगह दिखाएंगे इसको। तो आने वाले दिनों में कोई और फिल्म इस तरह से या किसी और तरह की राजनीतिक फिल्म पे क्यों आप बनाना चाहते हैं? नहीं, हम राजनीतिक फिल्म में 1971 वॉर तो हमारे देश की एक इवेंट है, इसमें कोई राजनीतिक कुछ नहीं है। नहीं, इसके बाद क्या अगला फिल्म कोई इस तरह का राजनीतिक फिल्म बंगाल को लेकर कुछ सोचा आपने बनाना? नहीं, मैं देखिए राजनीतिक फिल्म हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिससे लोग इंस्पायर हों, जिसमें कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज हो जिसको अनुसरण करके लोग अपनी ज़िंदगियाँ जो है बेहतर बना सके। हमारा मेन उद्देश्य वो है फिल्म बनाने का। स्टूडेंट का किस तरह का रोल रहेगा जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर iLEAD? उनका तो पूरा रोल है, तो स्क्रिप्ट लिखने में इन्वॉल्व हैं, फिर वो स्क्रीन प्ले लिखते हैं, उसके बाद में वो जब शूटिंग फ्लोर पे जाते हैं, प्री प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो सब जगह इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स। नतून की